So we are talking about 2 k cap into I cap, 2 k cap into 2 k cap cross I cap. So I cap. So it will be magnitude of 2 k cap, magnitude of I cap into sine theta. So now you all know what is the angle between k and I. K is what? Z axis. Okay, Z axis and x axis. What is the angle? 90 degree. Okay, so theta will be 90 degree. Okay, so this 2k cap magnitude will be 2 into 1 into 1. So this will be 2. Now the important thing that we have to find here is the direction. That is the most important thing. Okay, so there is a vector here that is in this direction. Sorry, this z axis, there is a vector here. Okay, the magnitude of which is 2k cap. And then there is a vector here of magnitude I cap in x axis. Okay, so we have to find out the direction of the resultant vector. So how will you find? This is I cap, this is k cap. Okay, open the palm in the direction of k cap, because I will show you here, because it is angle will start from k cap and end on I cap. Okay, so what will I do? I will open my palm in this direction. Okay, and I will fold it towards I cap. Okay, so k into I, which direction this is pointing? It is pointing in upwards direction. Upwards direction is j cap. You can show it here also. You open a palm here, you fold it towards I cap. What it is showing? It is showing the upward direction. So this is the j cap here. If the above direction is j cap, so it will be positive. So the answer will be 2j cap. So this will be 2j cap. Okay. Now the next is 2k cap into 2j cap. So I will write it here. 2k cap into 2j cap. 2k cap into 2j cap. Okay. This will be equal to magnitude of 2k cap into magnitude of 2j cap into sine of theta. Now what will be the angle of between y axis and in z axis and y axis? Y axis angle will be 90 degree. So theta will be 90. Okay. So magnitude of 2k cap is 2, because k cap is 1 into 2 into 1 is 4. Okay. Now the important thing here is the direction. So we are talking about here in which direction? Y axis j cap and talking about z axis, that is the k cap. So here you will have 2k cap, here you will have 2j cap. Okay, so now you will find the direction, same thing. Okay, this will be go like this, arrow will be pointing here, k cap, j cap. Okay, open your palm. Okay, you will close toward 2j cap. Where is it pointing? It is pointing towards me. Okay, which is this direction? This direction is this one. And what is this direction known as? Minus j cap. This is here is j cap. This is minus j cap, or minus y axis you can say. So minus 4 j cap. So the answer of this is minus 4 j cap. Okay, and last and final, plus 2k cap into 3k cap. 2k cap into 3k cap. So that is quite simple. Now you must have already realized what I am talking about. 2k cap into 3j cap. So 2k cap into 3k cap. Okay. So 3k cap. So now you all already must know k cap here. There is a vector of 2k cap here and there is a vector of 3k cap here. What is the angle between them? It will be 0, because they are in same direction. So the answer will be what? Sine of 0. So the answer is
This is 0, so full answer will be 0 because sine of 0 is 0. So this is 0. Okay, so now you can all simplify this. So answer will be 0 plus 4k cap minus 6j cap. Okay, minus 4k cap plus 0 plus 9i cap plus 2j cap minus 4j cap plus 0. Okay, so you can simply add them. This will be 0 minus 6j cap plus 11i cap minus 4j cap. This will come out to be 11i cap minus 10j cap. Okay, whatever. The answer is not important. The important thing that we learned from this concept, this question is we found out some results. That are the important thing I am going to talk about here. Okay, these results are you can either memorize them or try and find out the way I told you. Okay, so these results are basically I cap cross I cap is equal to j cap cross j cap is equal to k cap cross k cap is equal to what? Is equal to always 0. Okay, we found out from the results that from this question that we have solved out. Okay, and I cap cross j cap is equal to k cap comma j cap cross k cap is equal to I cap comma k cap into cross I cap is equal to j. We found out all these results from these multiplications, this question that we did. Okay, and there are a few more results that we are going to talk about here. Okay, the negative ones. I cap cross k cap is equal to minus j cap. Okay, similarly j cap cross I cap is equal to minus k cap, and k cap cross j cap is equal to minus I cap. Okay, these are the results that are important to remember, and you can find them using the tricks I told, the way I told you just now. You can use that way to find them, or you can simply memorize it. It's up to you. Okay, but these results are very, very important. Okay, so this is about the cross product of unit vectors. Okay, now you must be all thinking that this is a very long way. Okay, it must be coming to your mind that using this method the multiplication is so long. So I will tell you all a shortcut that you can use. Okay, this shortcut you will learn in your further classes, but for the time being, to help you to solve the questions easily, I am going to tell it now to you. Okay, it's quite simple. So I will rub all of this. This will be quite useful to you all. So I will take a question that is given in your book. In your book it is given R is equal to you have to simply find out the cross product of R cross P.
You have to find out what? R cross P. Okay. So there are two methods. Either you can multiply these two. You can multiply these two and open bracket one by one. You can open the bracket like I did before. Or there is another method that is basically using the determinant method. Okay, this we will study in the mathematics later on, but it's quite simple trick to solve these big questions. Okay, it's very simple. There's nothing complicated. First, what you will do? You will make two parallel lines. These indicate the determinant. You are trying to find the determinant. Okay, done. Now what you will write? You will write I, J, K cap here. Okay, simple. Then what you will write? You will write the coefficients of I, J, K cap. What do I mean the coefficient? जो I, J, K से पहले लिखे हुए हैं ना नंबर, इधर R के इधर क्या लिखा हुआ है? 4, 6 और 3 है I, J, K cap के पीछे, और इधर क्या है? 2, 4 और 5. ठीक है? तो you will write them in the order. अगर यहाँ पे first you have written here, you have to find out R cross P. So you will write the coefficient of I, J, K cap first of the R vector. Okay. So what will come here? 4, 6 minus 3. ऐसे लिख लिया. उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है? P. ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे हम? I, J, K cap के जो कोफिशिएंट हैं इधर 2, 4 और -5 है ना, उनको यहाँ लिखेंगे 2, 4 और -5. इतना हो गया. That's done. बस now it's very simple. Okay. Now what you will do? You will simply first of all you will write here. You will make a sign here. Plus, minus, plus. इस ऑर्डर में लिखना है हमेशा. Plus, minus, plus. Okay. Then what you will do? You will start with I cap. Okay. So what you will do? You will put a I. When you start with, you will start with this I cap. So you will write I cap here. You will simply write I cap here. Okay. So when you write I cap, you will open a bracket, and what you will do? You will cover this side and cover this side. ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया. दिख क्या रहा है अभी? 6 minus 3, 4 और -5. Okay. So what you will do? You will multiply these two and subtract these two from multiplication of these two. What I mean to say? I cap इन दोनों को तो कवर कर लिया था. तो 6 into -5 माइनस करना है हमेशा 4 into -3. ब्रैकेट क्लोज. ओके. आगे नेक्स्ट, इसके बाद फर्स्ट वाला एलिमेंट हो गया. अब सेकंड एलिमेंट पे जाएंगे. सेकंड एलिमेंट क्या है? जे कैप. बट जे कैप के ऊपर साइन क्या है? माइनस है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप. अब यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर दो. ओके. नाउ व्हाट यू विल डू? जे कैप के नीचे वाले जो भी एलिमेंट है और साइड वाले एलिमेंट है वो सारे कवर कर लो. कवर कर लिए. ओके. अब कौन सा एलिमेंट दिख रहे हैं? 4 -5, 2 -3. तो बस वही सेम चीज करनी है. 4 into -5 करोगे. 4 into -5. ओके. उसके बाद क्या करोगे? माइनस 2 into -3. ओके. लास्ट वाला देखेंगे. लास्ट क्या है? के कैप. तो इधर क्या लिखेंगे? प्लस के कैप. You will write here plus k cap. ठीक है. And then what you will do? You will cover the elements next to it and below it. तो बचे कौन से एलिमेंट? These 4. Now we look at them. 4 into 4 multiply करो. 16. Okay, we'll write 4 into 4. 4 into 4 minus 2 into 6. Okay. Now you will simply open the brackets. That's it. You will get your answer now. This will come out to be I cap minus 30 plus 12 minus j cap minus 20 plus 6 plus k cap 16 minus 12. Opening, further solving it, minus 18 plus 14 j cap plus 4. So this will make your procedure very simple. Okay. अब तुम तीनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा. ठीक है. तो you can use this determinant method.
आई एम टेलिंग यू दिस मेथड क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है ये, सो ऑब्वियसली यू कैन यूज इट, ठीक है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा इफ यू यूज दिस मेथड। ओके, सो एक दिस वाज द शॉर्टकट। सो देयर इज वन लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर दैट वी विल सी। आई विल ड्रॉ दिस। Okay, the last topic is that we have to show that the area or there is this definition given in your book that I will read. The magnitude of cross product of two vectors is numerically equal to the area of a parallelogram whose two sides represent the vector. Okay, so इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this? If we are talking about two vectors here, P and Q, so इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होएगा? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, या वेक्टर P क्रॉस Q। साइन थीटा, यही है, अभी थोड़ी देर पहले देखा क्रॉस प्रोडक्ट में हमने, ठीक है। सो व्हाट डज दिस डेफिनेशन से दैट द क्रॉस प्रोडक्ट जो है इन दोनों का वो किसके इक्वल है? न्यूमेरिकली इट विल बी इक्वल टू द area of the parallelogram formed by the side these two vectors। okay, parallelogram कैसे बनाएंगे? एक पैरेलल साइड बना देते हैं इसके P के, उसकी वैल्यू क्या होगी? P हो जाएगी, बिकॉज पैरेलल है और सेम एंगल पे। और वैसे ही यहाँ पे ऊपर एक बना देते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी? Q हो जाएगी, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? आप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये एंगल थीटा था। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? इट इज बेस इनटू हाइट। ओके, व्हाट हाइट वी टॉक अबाउट इन पैरेललोग्राम? द परपेंडिकुलर हाइट। दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट, यस। ओके, सो लेट अस गिव इट अ नेम। ओके, ए बी सी डी ई। ओके, दिस इज द parallelogram we are talking about. Okay, so base into height. Okay, what is the base? Base is AB, height is ED. Base into height. Okay, तो base AB है, AB की क्या वैल्यू है? Q। और ED की क्या वैल्यू होगी? ED की वैल्यू तो नहीं पता मेरे को, बट मेरे को P, मेरे को ये पता है। तुम ये देखो सारे, इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED आपको एक साइड पता है, वो क्या है? P, पता है ना ये आपको। ओके, आपको एक एंगल भी पता है, थीटा है, दोनों के बीच में, वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो आप DE निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से। कैसे निकालोगे? देखो, DE अपॉन AD इसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के, पढ़ा हुआ है आपने। ओके, so DE will be AD sin theta, और AD की वैल्यू क्या है? P। so मैं कह सकता हूं P sin theta, P sin theta। सिंपल है, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, D। ED या DE की बात है, मैंने यहाँ पे D लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे DE की वैल्यू पुट करता हूं तो क्या आएगा? P sin थीटा। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस, ये क्रॉस का मतलब मल्टीपल डॉट लिख देता हूं, चलो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, ठीक है। अब Q डॉट P sin थीटा है, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? Q क्रॉस P, क्या लिख सकता हूं? Q क्रॉस P। ओके, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर ने तो बोला था कि we are only talking about the numerical value. What does numerical mean? Only magnitude, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर PQ आया और इधर Q क्रॉस P आया तो मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। सो न्यूमेरिकली दिस इज करेक्ट, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होएगा? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बट हम यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। ओके, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड वाइज Q क्रॉस P एंड P क्रॉस Q इज exactly the same। तो अगर ये ऐसा आया तो कोई इसकी ऐसी कि there is not a problem, but numerically these two are same। okay, so that is the
end of the chapter. Okay, so this is the end of scalar and vector. So now we will try and do some numericals in the exercise that is given on the last page.